Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, a show that addresses all your stock-related queries. In case you're watching us for the first time, well, this is where over the next 50 minutes, top stock market experts will advise you on the stocks that are in your portfolio and also the stocks that you may have on your watch list and do not know whether it is the right stock or the right time to enter those stocks. Well, all of those questions you can send in to us on the WhatsApp number that's flashing on your screens. Don't forget to mention your name, your contact details and your location as well. We can also make you speak directly to the top market experts to get a custom made advice on your stock portfolio. Let me welcome our guest on the show today who will be addressing all your queries. Avni Bhatt, Senior Vice President, Equity Derivatives Research at JM Financial, is now joining in. Warm welcome to you, Avni, and thank you so much for taking the time out. Season's greetings to you. Seems like the Diwali cheer is finally coming onto the D Street as well. After 4 weeks of carnage on the D Street, we are finally seeing this week look up, at least to begin with. 230 points and 24,400 back on the screen. What is your outlook on the markets? Will we see this continue? Good afternoon, Sakshi, and a very good afternoon to all the viewers as well. Yes, so a good start to the week at least. Now, sustenance is going to be a question. Yeah. So, as per the data, options data, 24,500 is where the resistance is. So, I think Nifty move may continue up to around 24,440 to 24,500 area. And post that, we need to see if Nifty can sustain above that level or we see a second round of sell-off. So taking one step at a time, all those who are holding long positions, who had the courage to buy on Friday, and if they are holding longs, you can wait till 24,500. You can keep a trailing stop loss at 24,375 on the spot level. And in case of 500 is crossed, if we close about 24,500, then I think we'll be out of the woods and Nifty may head towards around 24,750. So currently, sustenance is going to be a question. So be very nimble footed, and around 500 level, you need to check whether it is sustaining or not. But keep trailing your stop losses for the longs. As far as Bank Nifty is concerned, I think Bank Nifty, frankly speaking, it has fooled the all the data points. It showed a huge bearish engulfing pattern on Friday, and the kind of recovery that we are looking at today, 51,800 is where it will face resistance. Till then, it may probably continue its movement. And on the downside, the support is at 50,000 only. It hasn't come up yet. So again, a question of sustenance here also. So wait and watch. Currently, at current levels, just try and trail your stop losses, but do not enter into any fresh longs. Okay, got it. So that's the view that's coming in on the overall markets, and we already have a lot of questions that are coming in from our viewers, and I think we have a first caller from Pune. Sagar Kamble is with us on the phone line. Sagar, good afternoon. How are you? Can you hear us, Sagar? Go on with your question, please. Okay, I guess there is some issue. We will connect back to Sagar, but in the meanwhile, we'll take some other questions from our viewers on YouTube. Sandeep Pancharya has come out with the first question. He says on Bank of Baroda, he's holding the stock at 270 rupees. Now he wants to know, should he continue to hold on or should he book near-term loss as it is increasing on the charts right now? Bank of Baroda, good set of earnings coming in, but the stock was thrashed quite a bit. How would you really look at the stock now? I think the negatives are already priced in now, and in last 4 days, if you see, it's making a higher high, higher low formation, and in fact, it's on a verge of a breakout of the consolidation pattern. So the breakout level is around 256. So once it crosses 256, you'll have a good momentum right up to 270. So once it comes, which we expect will happen because the negative news is already digested by the stock, and it should be gradually crossing the 256 level and heading towards 270. Okay, got it. So I hope, Sandeep, this has answered your question. We have Kalpesh Patel now with us on the phone line. Kalpesh ji, नमस्कार, कैसे हैं आप? पूछिए अपना सवाल. नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ मैडम. आज मार्केट भी बढ़िया है तो जी सबका मूड भी आज अच्छा रहेगा. बिल्कुल, बताइए.
तो मैडम मैंने एक्साइड का नवंबर का फ्यूचर बाय किया हुआ है एट द रेट 500 का। तो अभी जो थीम चल रही है वर्ल्ड मार्केट में पावर एनर्जी रिन्यूएबल में, तो इसमें कभी कोई अच्छा मूव कब तक आएगा? ये 600-700 रुपया इवन डबल कब तक हो सकता है? और ये मार्केट ने बॉटम बनाया नहीं बनाया, या फिर से ये 5 या 6 नवंबर को फिर से नीचे आ जाएगा 23,500 या 23,000 के नीचे? जो बात चल रही है कि 21,000 भी आ जाएगा, तो नीचे कहाँ तक दिख रहा है खाई? ओके, गॉट दैट। खाई कहाँ तक गिर रहा है? मुझे लगता है खाई से तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ हमने बाजार को देख लिया था, लेकिन अवनी एक्सपर्ट हैं तो उन्हीं से पूछेंगे दोनों सवालों का जवाब। पहला आपका जो एक्साइड का फ्यूचर लिया है आपने उसके ऊपर 500 पर, और दूसरा ओवरऑल मार्केट्स पर, क्या राय लगती है आप देना चाहेंगे अवनी जी इनको? सो एक्साइड मेरे हिसाब से इसका भी एक टेम्पररी अभी बॉटम बन चुका है, एंड यहाँ से हमें एक अच्छी रैली दिखनी चाहिए अराउंड 485 490 तक। तो शायद आपका भाव तो नहीं आए क्योंकि वो काफी ऊपर का बाइंग है, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबे समय का है तो बॉटम बन चुका है। यहाँ से अभी हमें नया लो तो नहीं दिखेगा। ऊपर 500 के ऊपर निकलने में थोड़ा समय लग सकता है, आपको करीबन 3 से 4 महीने देने होंगे। तो स्टॉक अच्छा है, आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 485 490 पे आता है, तो वहां पे आप फ्यूचर बुक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल मार्केट की बात करें तो एक टेम्पररी जो बॉटम है वो फिलहाल बन चुका है। एक अच्छा पुल बैक हमें दिखना चाहिए, और ये 24,500 के ऊपर अगर बंद देता है जिस दिन भी, तो ये एक्सटेंड हो सकता है 24,700 750 तक। बट उसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है। अभी पूरा मंदी का बॉटम अभी बना नहीं है। ये नीचे 23,800 के नीचे अगर आता है तो ये एक बार 23,300 तक आएगा। तो अभी धीरे धीरे हमें मार्केट को अप्रोच करना है। 23,300 का लेवल खुला है, अभी भी नीचे आ सकता है। बट उसके पहले ये जो बाउंस बैक है वो 24,700 750 तक कंटिन्यू रह सकता है। वहां पे आप अपनी जो भी लिवरेज पोजीशंस है वो थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए, उम्मीद करते हैं कल्पेश जी आपके सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर अरुण कुमार गुप्ता लिखते हैं, नमस्ते, कैन आई बाय बीएससी और सीडीएसएल एट द करंट प्राइस? आई एम ऑलरेडी होल्डिंग सीडीएसएल एट द रेट ऑफ 1453। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म व्यू? दोनों ही कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स अपने समय पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं। थोड़ा सा जो करेक्शन आया इसके बाद क्या अब भी इन दोनों स्टॉक्स में दम लगता है आपको, सीडीएसएल और बीएससी में? ऐसी दोनों के कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल का स्ट्रक्चर बेहतर है। तो आप अगर एवरेज करना चाहे तो सीडीएसएल में ही कीजिएगा। बीएससी में अभी भी थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है, इसने बॉटम टेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे बिकवाली हो सकती है, और ये करीबन नीचे 3800 के लेवल पे मिलता है तो बीएससी का अच्छा बाइंग लेवल बनता है। लेकिन करंट लेवल पे आप सीडीएसएल में एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो उम्मीद करते हैं अरुण जी आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ अवनीश चौधरी अब पूछ रहे हैं कि मैम आज इरिडा में रिकवरी तो आई है, तो मैंने जो 280 पे लिया हुआ है यहाँ पर अब क्या एवरेज करूं या फिर क्या बने रहूं? किस तरीके से आप सलाह देना चाहेंगी? 196 पर चल रहा है फिलहाल, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर। जी, ये एक पुल बैक रैली है, लेकिन एक बार ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ऑलरेडी तोड़ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये पुल बैक रैली जो है वो करीबन 204 205 के आसपास फिजल आउट हो सकती है। तो अभी भी एवरेजिंग का टाइम नहीं है। एकदम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2 या 3 दिन के लिए अगर आपको खरीदना हो तो करंट लेवल पे खरीद सकते हैं 205 के टारगेट के लिए। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 192 का। तो मोर और लेस रिस्क रिवॉर्ड का 1:1 है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। बट एवरेजिंग ओके, के लिए मेरे हिसाब से अभी भी रुकना चाहिए। ओके, गॉट इट। चलिए, अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर प्रजापति हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मिस्टर प्रजापति, इफ़ यू कैन हियर अस, कैसे हैं आप? पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा पटेल इंजीनियरिंग का 50 शेयर है ठीक एक्सेट है, के भाव पर। तो कितने इसे भाव मैं क्या पर? करूँ, होल्ड कर? जी एक्सेट के भाव पर 61 के रुपीज 61। पर 50 शेयर है। ठीक है, क्या करूँ, इसे 61 के होल्ड भाव करूँ पर या खरीदा कैंसिल है। सेल कर दूँ? जी, ज़रूर कैंसिल आपको या राय सेल? दिलवाते हैं। ओके, ठीक है। पटेल इंजीनियरिंग 61 के भाव पर खरीदा हुआ है, होल्ड करें, एवरेज करें, किस तरीके से आगे बढ़ें पटेल इंजीनियरिंग पर? अब नहीं है
जी, पटेल इंजीनियरिंग में नीचे 42.5 का अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये जब तक 42.5 टेस्ट नहीं होता है, ये छोटे मोटे पुल बैक में फिर से बिकवाली हो सकती है। तो अभी वेट एंड वॉच है। 42.5 के लेवल पे आता है तो वहां पे आप एवरेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो उम्मीद करते हैं आपको भी अपनी राय मिल गई होगी। नेक्स्ट अगर सवाल लेते हैं, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, ये चंद्रहस का सवाल आया है और ये बोल रहे हैं, आई एम होल्डिंग इंडियन होटल्स एट द प्राइस ऑफ 650 and I want to buy more. Can I buy at this level or should I wait? What is your view? इंडियन होटल्स भी एक पसंदीदा स्टॉक रहा है एनालिस्ट का ने, अगर हम टूरिज्म, होटल स्पेस, हॉस्पिटैलिटी स्पेस की बात करें तो, क्योंकि दिग्गज कंपनी है, मार्की इनके जो फाउंडर्स हैं वो हैं, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडियन होटल्स करंट भाव पर आपको कैसा लगता है? जब खरीदा हुआ है 650 पर, अभी अराउंड दैट लेवल भी एवरेज किया जा सकता है क्या? जी, मेरे हिसाब से आपका बाइंग लेवल बहुत परफेक्ट बाइंग लेवल है। तो और भी अगर ऐड करना है तो आप 650 के लेवल पे ही कीजिएगा। अभी 675 676 आ चुका है, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ ये 700 तक की जगह है। 700 के लेवल पे वहां से फिर से बिकवाली हो सकती है। तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा एवरेज करके ऊपर 700 में बुकआउट करना है तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय के लिए रखना है तो 650 का लेवल बहुत परफेक्ट लेवल है जहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं। Okay. Next, let's take another question. All right, we have another question. This is coming in from Abhishek Kumar, and he says, "Hello, ma'am. Can you suggest me a stock for swing trade?" Yes, definitely. So for a swing trade, I think you should go with the pharma sector, and Sun Pharma is one stock which will, even in case if your view goes wrong and if you're not able to play the swing, you will not be in a loss. It's a fantastic stock to hold. So Sun Pharma from current levels, you can buy for a target of 1940 on the upside, and you can keep a stop loss of today's low, which is 1835. ओके, गॉट इट। सो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको एक स्विंग ट्रेड के लिए भी सवाल मिल चुका है। कल्पेश कचारिया हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सूरत से इन्होंने हमें कॉल किया है। कल्पेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो कल्पेश जी। उम्मीद करते हैं आप अपने परिवारजनों और सभी प्रियजनों के साथ बहुत ही बढ़िया दिवाली मनाने वाले हैं इस बार। अब देखिए साइंस तो वापस आ रहे हैं बाजार में। पूछिए क्या जानना चाहते हैं? ठीक है, दिवाली के लिए एक ऐसा शेयर जिससे कि आपका दिवाली बोनस निकल जाए। ओके, बढ़िया। अवनी जी, अब आजकल स्टॉक मार्केट से ही बोनस भी चाहिए दिवाली का, तो अब बताइए कौन सा शेयर आप रेकमेंड करेंगी दिवाली स्पेशल? सो बोनस तो सरकारी कंपनी से ही आता है, तो हम रेकमेंड करेंगे आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल में आप एंटर कर सकते हैं। बराबर 200 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऑलरेडी होल्ड कर रहा है और थोड़े थोड़े रिवर्सल के साइंस भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से गेल में एक अच्छी पोजीशन, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 202 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल सकता है 222 से 223 तक आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर। ओके, गॉट इट। चलिए अगला सवाल भी ले लेते हैं, हमारे साथ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं। अरुण जी पूछते हैं, आई एम होल्डिंग HAL 70 शेयर्स एट 4460, कैन आई ऐड मोर एंड व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू ऐड? आई हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, कुड यू प्लीज एडवाइज? HAL अब देखा जाए तो अपनी डिफेंस शेयरों में सबसे ज़्यादा नुकसान हमने देखा है इस हाल की गिरावट में। कई कई शेयर्स 30, 40, 50% भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं, चलो 4460 पर ख़रीदा हुआ है, अभी एवरेज करने की सलाह देंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं, अभी भी इसमें एवरेजिंग नहीं करनी है आपको। 3850 के लेवल के ऊपर बिल्कुल एवरेजिंग करनी नहीं है, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। जो एक पॉजिटिव न्यूज़ हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, कि जो इंडिया चाइना के बीच में ट्रूस हुआ है
तो उसके वजह से भी अभी डिफेंस शेयर में जो डिमांड थी वो काफी कम हो जाएगी, तो उसके कारण भी डिफेंस शेयर में अभी इमीडिएटली ऊपर आने में समय लग सकता है। तो ये वैसे तो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन स्टॉक्स के लिए ये काफी नेगेटिव है। तो ये नीचे 3800 के लेवल, 3850 के लेवल पे आता है, वहां पे आप एवरेजिंग करिए। ओके, गॉट इट। तो चलिए, आपको ये भी पता चल गया है कि कहाँ आपने एवरेज करना है। मिस्टर अवधीश ठाकुर पूछते हैं, नमस्ते मैम, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में मेरे को 55 का टारगेट मिला था, मैंने होल्ड किया हुआ है 44 के लेवल से, अभी मैं आगे क्या करूं? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 44 के लेवल पर ख़रीदा हुआ है, इसी शो पर आके उन्होंने 55 का टारगेट लिया था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो पिछले 2 हफ्तों में जो गिरावट हुई है वहां से काफी सारे स्टॉक्स ने अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ब्रेक करके नीचे काफी चले गए हैं। तो ये स्टॉक अभी आपको होल्ड करना है, एवरेजिंग करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ से ऊपर आने की उम्मीद है, एंड ऊपर की तरफ ये चल सकता है अराउंड 45 तक। तो आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। सुयश पूछते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज पर, फिलहाल 2 महीने के लिए यहाँ पर बने रहना चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी? क्या यहाँ पर 2 महीने के बाद का टारगेट आप शेयर कर पाएंगे उनके लिए एक्साइड पर? जी बिल्कुल, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है, एक साइड में ऊपर 490 तक का टारगेट बनता है, अगर 2 महीने के लिए ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं तो। जी, तो यहाँ पे आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और 490 के लेवल पे आपको बुक कर लेंगे। ओके, गॉट इट। सो उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें सुयश। मिस्टर कोत्रा चंद्रास लिखते हैं कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन रेलवे सेक्टर, स्पेशली स्टॉक्स लाइक IRFC एंड इरकॉन, वी हैव ऑलरेडी सीन अ शार्प करेक्शन, and is it the best time to take an entry now? Do you think just like how defense is, has most of the correction played out, or is there more to go here, Avni? See, there's a lot of time correction that is pending in these stocks. So, not expecting any runaway rally or any major recovery also in these stocks anytime soon. So, यहाँ से शायद नीचे नया लो ना बनाए, रुक जाएगा, लेकिन अभी ऊपर आने में बहुत समय लग सकता है। उससे अच्छा आप जो रनिंग सेक्टर्स है जिनमें मोमेंटम पिकअप होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल रेलवे स्टॉक्स अभी भी अवॉइड लिस्ट में ही रहेंगे। रेलवे स्टॉक्स को अभी भी आप अवॉइड लिस्ट में ही रहने दीजिए, फिलहाल ये राय आपको मिल रही है। अपनी इससे पहले कि मैं बाकी के कुछ और भी सवाल लूँ जो हमारे दर्शक लगातार भेज रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अब बाज़ार में ये जो बाउंस आया है, इसमें क्या सही रणनीति होनी चाहिए बाज़ार में निवेशकों की? अब जब तक करेक्शन हो रहा था तब तक लोगों को ये लग रहा था कि और कितना गिरेगा, और लोग साइडलाइंस पर वेट कर रहे थे। अब जैसे ही एक बाउंस आया है, जैसा कि आपने बताया, सस्टेनेबल होना ये बहुत ज़रूरी है, ये देखना एक की लेवल के बाद होगा, लेकिन बाउंस के बाद भी क्या अब लोगों को इमीडिएटली जंप इन करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन सा सेफ सेक्टर है जहां पर अभी पैसा लगा सकते हैं कि मान ले अगर यहाँ से बाउंस कंटिन्यू रहता है तो? ओवरऑल आप क्या सही राय दे रहे हैं उनको? जी, मेरी राय रहेगी कि आप दिवाली अच्छे से मनाइए, ये हफ्ता जाने दीजिए, ये बाउंस बैक है, रैली नहीं है। सो यहाँ से पहले भी 24,800 के लेवल से ऊपर 25,200, 25,300 तक का बाउंस बैक आया था, लेकिन फिर हमने वहाँ से बहुत बड़ी बिकवाली देखी है, जिनमें स्टॉक्स में डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो अभी भी ऐसी कोई रिकवरी या निफ्टी का बॉटम बन चुका है, ऐसे कोई संकेत नहीं है। बाउंस बैक बिल्कुल है, 24,500 के ऊपर बन देता है तो ऊपर 750 तक भी शायद आ जाए बाउंस बैक, लेकिन अभी भी बॉटम नहीं बना है, तो वहां से फिर से बिकवाली हो सकती है। नीचे 23,800 और 23,300, ये दो लेवल जब तक टेस्ट नहीं होते हैं, हमें एक सस्टेन्ड रैली नहीं दिखेगी। ओके, गॉट इट। अगली हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, कौन बोल रहे हैं हमारे साथ? अवनी जी है हमारे साथ। हेलो, हाय मोमिता, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल मोमिता, you are calling from Kolkata if I am not wrong? Yes Momita, tell me what is your question?
Yeah, 1 year. Sure, we'll get you your view from Avni. Avni, HCC bought a few months ago at 36, is now back at the purchase price. What is the ideal strategy to have? Is this really a good stock to hold at this point in time? Yes, 100%. It's a good stock to hold. Now, all realty companies are looking up again, and I think the bottom is made for this entire sector. So, be it DLF or Oberoi Realty, a bottom is made, and we should see a good recovery of at least 8 to 10% in all these stocks in the coming 1.5 to 2 months. So, you can hold the stock, and I would suggest until and unless Nifty is out of woods, the overall market improves. Avoid averaging, but at current levels, you can hold the stock. It will move up to around 42 to 42.5 in a very short time. 42 to 45 in a very short time is what you can actually expect. So I hope, Mamita, this has helped you out in getting the right strategy on the stock that you're holding. Next, Namita Arora says, hi Sakshi and Avni ma'am, how are you doing? We're very well, Namita. Thank you so much for asking. We hope that you're also having a good time, and today at least you're breathing a high, sigh of relief in the markets today. So she says, since the market has already corrected sharply, please let us know 2 or 3 stocks for the long term. Avni, again the ball is in your court. For the long term, any 2 stock ideas that you can share with the viewers? Yeah, thank you, Namita, first of all, for asking. I've already mentioned 2 stocks. Those stocks, you need to have it in your portfolio. One is GAIL, Gas Authority of India. The second one is Sun Pharma. And out of the reality space, I think you can go for DLF. DLF has bottomed out, and we saw some exaggerated selling on Friday. I don't think we are making any new low. Today, the stock is almost 7% up. But if you can, you'll see the stock coming down somewhat, retracing back to around 814, 815 level. You can buy the stock at around those levels. So these are the Oh, 3 stocks that you can keep in the portfolio. okay, so all the viewers, if you are listening in and if you are looking for any opportunities for the long term, here Avni has reiterated 3 of our stock ideas which you can definitely have in your long term portfolio. There is DLF from the real estate space, there is Sun Pharma from the Pharma Pack, and Gas Authority of India, or GAIL, that's from the oil and gas space. So these are the 3 stocks that you should definitely look at. Suresh writes in and says, is it a good time to invest in Dr. Reddy's after the stock split? Could you please advise? Now, Suresh, you need to mention whether you have a long-term view here or not. But anyways, I'll take Avni's view. Avni, you're bullish on Sun Pharma. How about Dr. Reddy's, and after the split has now taken place? Not too excited about Dr. Reddy, because after the split, I think the overall holding will increase, and participation on the short side can also increase. So in this scenario, Dr. Reddy, I'll be comfortable buying it at around 1200 level. So wait and watch for the stock, not looking at any major recovery here. But yes, pharma, definitely you can go for a buy. Okay. Ankur Modi writes in and he says, I'm from Jaipur. Can I add more Varun beverages for the long term at the current levels? Ankur, it would have helped if you would have sent your own, average purchase price on Varun beverages for Avni to get you a clearer view. But at the current levels at 605, what do the charts suggest to you, Avni, on Varun beverages? This has been an outperformer for sure. Yes, actually, I believe we had discussed the same question last week also, Yeah. and he had called up last week also. So Varun Beverages, if you want to buy, I think 570 is the right level, and on the upside, as far as trading part is concerned, 632 is the resistance where you can book out, re-enter at around 570, and for a longer period of time, also enter at 570 only for a target of 680. All right, for a target of 680. Let's get the next question going then.
We have Vinod Chaudhary writing in. Hi, Avni and Sakshi ma'am. Thank you so much for doing this for retail investors like us. This show really helps us. Thank you so much, Vinod, for writing in and appreciating the show. We are glad that we are able to help you out with top market experts like Avni, really helping you out on a personal level as to what should you be doing with your strategy and your stocks. Now, today he wants an advice on two stocks, Avni, from you. One is REC and the other one is CG Power. He needs to average at the current levels. Can he do so? And what would you suggest? He is holding about 50 shares of each, but he has not shared the purchase price. CG Power and REC. Right. So REC is still in the downtrend. There's a pullback that is seen, but it may fizzle out from around 533 levels. And for averaging, I think you can wait for 482 level. That's where you can average REC. And CG Power, just give me a minute. Sure. Yeah, CG Power also you can wait. 680 is the level where you can average. Okay, got it. So both these ideas have been shared with you and the suggestion too. We hope that you follow both of these as well. Avni, we will thank you on that note for being with us on this show to share with us all these views and thoughts with all our viewers. Like you always come week on week to help our viewers. We hope that you continue to do so in the next Samvat as well. And in the meanwhile, we wish you a fantastic upcoming Dhanteras, Diwali and the upcoming New Year's as well. We hope that this year turns out to be a great one for you personally, for your family members, loved ones and your team members at large as well. Thank you, Sakshi. All right, viewers, what we'll do is we will quickly look at the markets, and before we have the other guests joining right in, remember we have come back. We are near the high point of the day, 1.2% higher on the Nifty, 24,475. That's the level at which the Nifty is really trading at. Let's get in some stocks going in terms of the top performers. Shriram Finance, 6.9% higher in trade at 3306. Adani Enterprises up 4% as well. ICICI Bank about 4% higher too. These are the heavyweight counters that are really supporting the market sentiments right now. M&M and IndusInd Bank is now coming back sharply. Remember, it was thrashed after the earnings, and therefore you would just see some recovery happening on IndusInd Bank as well, about 3.2% higher for the stock right now. The market breadth has improved. We are seeing more and more stocks joining into the green zone. PSU banks are definitely the stocks that are in the bright and shiny zone today. You can see Bank of Baroda, that's flying high, 5.5% up right now. Canara Bank 4.5% up, PNB, Union Bank, Bank of India, Central Bank of India, Indian Bank, PSB. These are all the stocks that are up over 3% each. So the entire pocket is thick in action. Volumes are being seen. Most of these stocks are trading at the day's high. The second pocket that is shining bright is the metals pack as well today. If we look at Hindustan Copper, that's moved up 6% in trade. NMDC, Adani Enterprises, Hindustan Zinc, Vedanta, all the stocks that are buzzing sharply. You also have the metals and the media stocks inching higher now. The auto space is up by 1.7% in trade. You have the auto space that's up by, media space that's up by 2%. Small caps have returned back into the green sharply too, 1.3% higher for the small cap 100 index. Then you also have some of the stocks within the small caps that are really soaring in trade. Let me get you a list of those stocks too. Aditya Birla Real Estate is up by 8.2% today. Amara Raja 8% higher. After a long haul, these battery makers are sharply up in trade. CDSL we discussed with Avni, that's up by almost 5% in trade. And Laurus Labs is also up by about 5.5%. These are some of the top movers in the small cap space. All the sectors of the Nifty are now back into the green, viewers. So it's a pretty looking screen right now, and just the right time to welcome Nilesh Jain, Head and Vice President of Derivatives Research, who's now joining in at Centrum Broking. Warm welcome to you, Nilesh, and thank you so much for taking the time out. Well, season's greetings to you too. Hope you have a great Diwali ahead. The signs are already visible. Finally, there is some cheer coming back into the markets. So how are you looking at the markets right now? Very good afternoon to you, Sakshi, and happy Diwali in advance to you and entire Business Today team as well, and Thank all the you. viewers as well.
If you look at the market today after a long time, it's a sigh of relief, I would say, and a good rebound. In fact, where in spite of we are getting mixed cues in the global market, we are in fact outperforming. Overall, structure-wise, it seems like today could be first day of reversal. And if I just look at the previous 3 4 year chart, the RSI, which is a momentum indicator, it has gone into extremely oversold territory below 30. And on previous three occasions, we have seen whenever RSI for the Nifty on daily time frame slipped below 30, we have witnessed a smart recovery from the lows. And similar kind of expectation is currently we are having on the market. And we expect Nifty to witness a strong pullback towards 24,800, 25,000. So at current level, I think today could be a first day of reversal, and we are expecting a follow-up move in the coming sessions. In this week, we have monthly FN expiry as well, so there could be possibility of a short covering rally. So yes, we are bullish on the market given the kind of a setup. Also, the volatility index is cooling off from the highs, and these are the indicators that we might see this pullback and momentum to continue. Okay, got it. So that's the view that's coming in on the overall markets. Let's get started with taking all our viewers' queries with Nilesh now. Our first caller is with us for you, Nilesh. Vinod is with us on the phone line. Hi, Vinod. Good afternoon. Vinod, go on with your question, please. Happy Diwali to you. Thank you so much. Tell me. I just want to make two queries. One is the IPO cementation. Mm-hmm. So I have 65 shares at the rate of 475 Okay. and HUL power systems. Is it right time to average? So I have like 60 shares with 580 as an average price. Okay. ITD cementation and HCL technologies is what you hold. HBL power systems. HBL Power Systems. Okay. Got it. So these are the two stocks. Let's quickly get Nilesh's view going on this one. How would you really look at ITD cementation first, Nilesh? Because the stock is down today, reflecting there is news flow that the management is looking to sell about 46% stake to Adani Group right there, and therefore we did see a sharp fall in morning trade. It has recovered substantially from the morning lows as well. At the current levels, do you see promise on this one? Sakshi, if you look at ITD cementation structure on the weekly chart, the stock is constantly forming a high top and high bottom formation, and we have seen a strong momentum in last 2.5 years in this particular stock. So this recent correction, I think, is giving a good opportunity to add a fresh long, and also if somebody is already holding the long position, can continue to ride. Keep a trailing stop loss somewhere around 470. And stay put, I would say. I think there will be going forward. There will be a relief, rally, and reversal as well in this particular stock. So ITD cementation for a position target of 600 plus, one can stay put, keeping a stop loss below 470. Okay, and what about HBL Power? The stock is currently trading at around 534 odd levels, and Vinod has bought this at around 580 levels. What would you suggest? So I think this stock as well is in an uptrend, and on the weekly chart, a similar structure can be seen here as well. So structure looks positive, and I would advise to average this particular stock if it falls in the range of 490 to 500. That could be a good average level. And support, I would say a major support is placed somewhere around 450. So that should be the trailing stop loss in this particular stock. One should have a positional view of more than 6 to 8 months. Given this kind of horizon, I think the stock has a potential to test its previous all-time high mark of 650 to 700. Okay, got it. Next, we have Mayank Saxena writing in. He says, I have 45 shares of Idea Forge. I bought them at 745 levels. Can I average Idea Forge at the current levels? What will you say, Nilesh? Sakshi, technically the stock has been in a downtrend in between post listing, and in between we saw some pullbacks, but that got sold into. Now structure is still looking weak,
and we might see this downward trajectory to continue towards the levels of 570 to 560 as well. But if somebody is already holding the long position and want to average, I think 570 could be a good and average point where one can add fresh longs as well. But I don't see any major upside in this particular stock for the time being. Till the time it doesn't take out 700 level on the upside, I think there could be possibility of some consolidation. So Okay. one should have a long-term view, long-term approach if somebody is looking to average in this particular stock. Okay, got it. So I hope this has answered your question too. Let's take the next one. This is from Shashidhar Reddy. He says, I have RVNL, 12 shares. I bought them at 644. Can I average at the current levels? Again, railway space has been beaten black and blue, Nilesh, and some of these stocks are actually showing some positive momentum in the bounce back today. Do you think this is the right time to average RVNL? First of all, Sakshi, these are the sectors where one should not chase the momentum because historically we have seen defense, railways, this kind of run up always followed by a sharper correction. That is what Yeah. we have witnessed in RBNL as well. Now, if somebody already bought it at a high level, then no option to exit now because already we have seen a sharp correction, sharp decline. So better entry point now that comes around 370. So ideally, one should wait for further dip towards 370 to average the existing position. The stock has a very strong support near about 350, so that should be the stop loss. Okay, got it. So that's the view that's coming in. Next, let's take another one. This is from Hardik Patel. He says, Coal India 480 पर 200 शेयर लिए हुए हैं. अभी क्या करना चाहिए? क्या ऐड और कर सकते हैं अभी करंट लेवल्स पर? नतीजे आने के बाद यहाँ पर थोड़ी और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ी है आज. 3.5% गिरता हुआ दिख रहा है अभी, लेकिन इससे ज़्यादा गिरावट देखी थी हमने मॉर्निंग में. 444 पर चल रहा है कोल इंडिया अभी. क्या करना चाहेंगे यहाँ पर नीलेश? सो देखिए यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। मैं कहूंगा कि थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं बिकॉज स्टॉक और करेक्ट हो सकता है 420 तक के लेवल पर। तो ठीक है. 420 के आसपास एवरेज करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के होराइजन से आई थिंक स्टॉक इज गुड, काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने की ज़रूरत अभी नहीं है, ये राय आपके लिए मिल रही है। अगला सिंधु बैंगलोर से हमें लिखते हैं कि कैन आई एंटर डीएलएफ एट द करंट लेवल्स। नतीजे काफ़ी बढ़िया आए और उसके बाद एक दमदार रैली आज हमने डीएलएफ में देखी है और ये स्टॉक तकरीबन 8% तक ऊपर जाता हुआ हमें दिखा आज के सेशन में। ऑन डीएलएफ व्हाट वुड योर व्यू स्टैंड करंटली? See, we are pretty bullish on all real estate stocks, DLF, Oberoi, Godrej Properties. This has been our three preferred bet. But after a surge of more than 6%, I think it's not advisable to chase. You'll get it somewhere around 800 or maybe 780 going forward. But staggered way, may I think this stock can be bought. And if somebody is already holding the long position, can stay put, keeping a stop loss below 720. And fresh entry, I would advise to wait for some dip. ओके, फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा डिप्स का इंतज़ार फ़िलहाल करना चाहिए, ये राय आपके लिए दी जा रही है। अगला हमारे पास एक सवाल आया है अभिषेक झा का और ये पूछ रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन बीईएल, क्या करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं? अगेन जैसे आपने बताया नीलेश कि रेलवेज़ और डिफेंस जैसे काउंटर्स में सबसे ज़्यादा मार दिखी है हमने इस ऑनवर्ड करेक्शन में और कुछ स्टॉक्स तो जो डिफेंस के हैं वो 50% से भी ज़्यादा गिरते हुए हमें नज़र आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की वेल्थ इरोड हुई है क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने एकदम पीक पर डिफेंस के एंट्री लिया था और जब से एकदम ये यू टर्न आ चुका। बीईएल एक ऐसा पसंदीदा स्टॉक था जो काफ़ी सारे एनालिस्ट ट्रैक कर रहे थे जब डिफेंस का ऑन गोइंग मोमेंटम था। फिलहाल 268 के लेवल्स पर आपको बीईएल कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक कहा साक्षी आपने। ये एक सेक्टर ऐसा था जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन, अल्सो प्राइस वाइज करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल पोजिशनली अगर देखें तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, 1 से 1.5 साल के होराइजन से देखें
तो स्टॉक यहाँ से रिकवर करके रिकवर हो सकते हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है कि यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि बेहतर विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं, तो बेहतर होगा कि वहां पर फोकस करके चल सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्पेस में जब तक कोई कन्विक्शन वाला रिवर्सल देखने को नहीं मिलता तब तक बेहतर होगा अवॉइड करें। बीईएल अगर ऐड करना है तो 250 240 के रेंज में अगर आता है तब वहां पे ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में 230 के आसपास। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। फिलहाल के लिए वेट करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है और ये अंकुर का है और ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि दिवाली के लिए क्या कुछ आप स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो दिवाली के लिए एनी दिवाली पिक्स फ्रॉम योर साइड नीलेश फॉर आवर व्यूअर्स? Absolutely. So, couple of ideas that are on our radar. First of all, Max Healthcare. ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा है। अब अच्छी बात ये हुई है कि ऊपरी स्तरों से करेक्शन हमें देखने को मिला है। मार्केट में जो करेक्शन आया उसके चलते 1100 के हाइस बनाने के बाद स्टॉक हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 950 to 900 levels. So these are good entry point for Max Health, and we expect a gradual up move in this particular stock for next 1 year time frame. I think stock has the potential to test 1200 to 1300 kind of target on the upside. So at current level Max Health को ऐड करके चल सकते हैं और डिक्लाइन पे भी ऐड करें। 800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। एंट्री पॉइंट होनी चाहिए 900 to 950, एंड ऑन द अपसाइड 1100 1200 और मे बी उसके ऊपर तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। Okay, got it. I hope all our viewers have taken down those picks on Diwali. As far as Nilesh is concerned, he's shared his ideas with you. Next, we have Kotra writing into us. I have bought Hudco at the rate of 300. Can I average more at the current levels? Again, this is one of the outperformers from the PSU space that's again battered quite a bit from its all-time high levels. Nilesh, I think the index is already down about what 18-20% odd from the all-time high levels. So another one which has been beaten black and blue. But how about Hudco at 198? Does it look promising? Bought at 300, so the 50% of wealth erosion has taken place for one of our viewers, that is Kotra. Absolutely, Sakshi. So that has been the case for all the PSU stocks, and Hudco, as far as this particular stock is concerned, the stock is in a downtrend, and I think there is still some more room left on the lower side. Maybe it can test 180 levels. So better to wait for further dip towards 180 to 175 before you average your position. The stock has a very good support near about 160. So ideally, you should keep a stop loss somewhere around 160 now. And after such sharp correction, I think better to wait for further dip. Okay, got it. We'll take the last question with you, Nilesh, before we let you go, and that will be on what is your outlook on the Nifty till Diwali? When do we see, where do we see the Nifty at by Thursday and Friday, when we will finally see the Muhurat trading? And between the Nifty and the Nifty Bank, which index should one stay with till Diwali? So Sakshi, as I've started with my market commentary, the structure for the Nifty now looking very promising. If you talk about short-term structure, the RSI has gone below 30 levels. That is indicating a strong pullback from here. So purely from next 1 week point of view, for this week point of view till Diwali, I think Nifty has a potential to test 24,800 to 25,000 kind of levels. But these are not the levels where one should go aggressive. There may be another round of selling that may come, which will take Nifty towards 23,500, because that's the 200-day exponential moving average for the Nifty. And historically, in last 2.5 years, the Nifty index has constantly taken support near about its 200-day moving average. So that is what something we are expecting on immediate basis. And from next year Diwali point of view, I think the target that we are keeping on would be somewhere around 27,000. So that Okay. is something that we might see for next Diwali. And any dip is a good opportunity to accumulate. Within Nifty and Bank Nifty, we are very much, kind of having conviction with Nifty compared to the Bank Nifty. So yes, Bank Nifty also looks positive, but Nifty looks promising for 27,000 kind of level from 1 year point of view.
Okay, got that. Well, thank you so much, Nilesh, and yet again wishing you all the very best for the festive season at large, and we hope we continue to see you even more often to help all our viewers of Daily Calls in the new Samvat as well. Thank you so much for being with us. Thank you, Sakshi. All right, viewers, since a lot of you are already commenting on our YouTube platform saying, you know, what about the IPO space, what should one do? Well, Waaree Energies is the talk of the town. Today, the IPO finally got its debut, a strong debut at that, but lower than a lot of massive expectations of probably exceptional gains or even multi-bagger gains on day one is something that most of those who have got the allotment are now like really looking at. So I have with me Pawan Nahar joining in, who's been studying Waaree Energies right from, you know, the IPO note had come in, and he's been sharing all those information with you. Finally, the D-Day has come in, Pawan. Listing has happened. It happened at around 66% premium in comparison to over 100% premium that was being indicated a few days ago. And the price has also come down further after getting listed. What should investors do who have already got the allotment, and for those who did not get the allotment, what are the brokerage houses saying? So good morning, Sakshi. Waaree Energies, it delivered a strong listing gain, but it failed to meet the expectations of investor. It could Yeah. not deliver. It could not deliver a multi-bagger listing pop or 110% listing gains. But yes, 70 odd percent, 66 to 70% range. It was listed at 2,550 and 2,500 on BSE and NSE respectively. So we cannot say that it's a bad listing. It's a very good listing of 70%. But yes, it has seen some profit booking after listing. So but now it is almost flat as we speak. So let's talk about the IPO details first. The company raised around 4,321 crores, and with a lot size of 9 equity shares, and the price band for this issue was 1427 to 1503 rupees. So IPO was open between October 21 to 23, and it was overall subscribed a little more than 76 times. Now, what the analysts are saying. So, Prashant Apse from Mehta Equities, he's suggesting investors to hold the stock for a long term because he said that it did not meet the expectations because of the subdued markets. And if investors get a chance in the current sell off, fresh accumulation can be attempted in the range of 2200 to 2300 rupees. But yes, at the higher price levels around 2800, the investors may look to book profits in the stock. Mahesh Oja from Hensex Securities, he's also suggesting investors to book partial profits, and the fresh entry for a positional trader should be in the range of 2375 to 2400. That would be a optimal range for a intraday trader. Sagar Shetty from Stocksbox, he's suggesting investors to keep the stock for a long-term view because he says he believes that solar is the theme to play, and the plans of global expansion, competitive pricing, and a strong order book will support the stock in the coming months. Shivani Nyati from Swastika Investmart is suggesting investors to book profits, and because of the current volatile markets. But if any investors is willing to keep the stock for a long-term view, the stop loss should be around 2,000 rupees. So to protect the capital and to have some money off the table when they book the profits. That's all from my side, Sakshi. All right, Pawan. Well, thank you so much for all that update. Waaree Energies for you, a strong debut nevertheless, but brokerage houses do believe a slightly lower price than the current would be optimum for any fresh investors to be really looking at. For those who've already got the stock, around 2,800 in a short-term period, in case you're there only for a short term in this stock, could be looked at as an opportunity to book. And otherwise, partial profit booking is something that some of the analysts are also indicating for all the allottees of the IPO right there. Nevertheless, the stock is the company is a strong one. It's a leader in the solar PV makers, and therefore there was a huge demand, as Pawan has highlighted, and it continues to be so in the post-listing period as well. We'll leave you at that, viewers, on this edition of Daily Calls. I hope this has given you enough and more clarity about the stocks that are trading and buzzing in the secondary markets and both in the primary market as well. Well, continue to be with us on Business Today Television
television, as we will continue to speak to top market experts to help you really navigate through these wild gyrations in the market. And today, of course, how it's looking up, let's hope that it continues to give even more brighter aspects and bulls return to the D Street also for good. Thank you so much for being with us. Stay tuned. Fight, vote. As the United States gears up to elect its 47th president in days from now, adding star power, Beyoncé lent her support to Kamala Harris in Texas on Friday. Beyoncé declared her support for Harris, stating that America is on the brink of making history. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. Beyoncé's support has fired up the Kamala camp. Well, I think Kamala Harris is compassionate. She cares for every one of the American, every